PP. Right. Got it. Okay, I think it is visible to you. Is it Yes, visible? sir. Yes. Hmm. So linear programming problem, actually it is another important topic of your operations research. And in this case, again, our intention to be finding out the optimize the solutions. And it is a constant optimizations problem. Constant माने किसी constant को base करके हमें optimize करिवा. Let for example, ତମେ କିଛି ଜିନିଷ consumption କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛ, let's say କୌଣସି ହୋଟେଲ କୁ ଯାଇଛ consume କରିବା ପାଇଁ କିଛି I mean foods. ସେଠି ତମେ lunch ପାଇଁ order କରିଛ, but the lunch in order to calculate, I mean the taking the lunch, you have to take 2 to 3 items of it, right? But each and every item have certain prices are there, and the amount of money what you have, that is also be fixed. So price fixes, amount is fixes. Now the cost, I mean the money you have, that is fixed. Now the question to be arise is how much of which type of product that you have to order in order to maximize your diet, or in the other way maximize your satisfaction, right? So that is the one thing, one type of example of the constant optimization. Here the constant is the price of the product to be fixed, your money income to be remain fixed. Similarly, suppose with the help of गोटे छोटो काठ पटा को नेकरी तमे कोन करिवो, गोटे स्टूल टे तयार करिवो कि चेयर तयार करिवो. But to I mean to construct a particular stool or the chair, it take into account certain amount of your labor time and some amount of wood also be required. Kintu the amount of the wood which is to be required, which is available to you, it is fixed, and the time period also be the fixed for the labor time period what to be required for the constructing a tool or chair. So the problem is here how many tool and chair that you have to manufacture so as to maximize your profit. So due to that, that is this particular term is to be known as the constraint optimizations problem, right? Now there are the different varieties of problems are there, but in our syllabus or in our course, it will be concentrated to the product mix problem. And this product mix problem, what we say, the examples also be related to the product mix. That means, to manufacturing certain things, we have to mix up the certain items to it, and it follows certain assumptions. There is a certainty. Certainty means you have to spend a certain amount of money on different product, or certain amount of your time period to be utilized to manufacturing the product, that to be certain. And there is a linear combinations between your requirement and the amount availability. The technology what you follows to manufacturing the product will remains constant. There is no change in it over the production time period. And the profit per unit also will remains constant. You can change the profit, you can change the price of the product, you can change the amount of the money what you have. All things to be remain constant. So these are the basic assumptions are there to solving the problem. But here in the linear programming problem, we have to come across 3 steps, specifically 2 steps. One is called the formulation and second one is called the solution. Formulation passes through the 3 major items are there. One is your objective of the function, second one is your subject to constraint, third one is the non-negative constraints. So the relationship to be properties, once again it will be written that there is a relationship between variables to the constants must be the linear one, and the model must have an objective of the functions, there are some structural constraints and your non-negative constraint. So objective is fixed, what I say, your objective to maximize or minimize something else. Constraints are there like your income constraint, your time period is a constant, those constant to be treated as the constraints. Then non-negative constraints. Non-negative constraint means those variable you are going to be manufactured that we never turns to be positive. I mean never turns to negative. Suppose you have to move to a particular shopkeeper and
you have to purchase a product that price to be minus 10 rupees. Is it possible? Never it will be possible. So that means the product to be given by subscriber to you people, and also with the subscriber provide the 10 rupees to you. Those type of things that never happen. Exactly in the same manner, while you manufacturing the product, either you have to manufacture the positive amount of the product, or we can produce a zero amount of the product. The product never turns to be the negative. Therefore, it is called the non-negative constants. Now, formulating the linear programming problem, we have to follow certain steps. That means, first of all, you have to identify what is the decision variable, what is your objective of the functions, what are the constants, the conditions have to be given, and what are the non-negative constants. So based upon this, you have to formulate the given problem. Let's say we start with an example. It is given to you a sub can make the two type of sweets, sweet A or B or and B. They use two resources. That means जो sweet दीटा का production करिया पे जाओ छि A और B दीटा ingredient utilize होछि गोटे ला flour use होछि आ गोटे sugar use होछि, right? Now the point is here, to make the one packet of your sweet A, it needs 3 kilograms of flour and 3 kilograms of sugar, right? So flour use होछि 3 kg रा, sugar use होछि 3 kg रा. Similarly, in order to produce the packet B or the sweet packet B, it required 3 kilograms of flour and 4 kilograms of your sugar. That means sweet packet A or B production करिया पे किसी amount रो flour और sugar requirement होछि. तमने कौन हला दीटा product हमें production करिबा. So here the variables have to be distant variables have to be A and B, the product A and product B, or the sweet A and sweet B. Then they have 11 kilograms of the flour. देखो दीटा constant है गला, flour टा fix है गला. Amount of the flour to be remains fixed, that is the 21. And amount of sugar also be fixed, that is the 28. So sugar or flour dita are constant, and those are to be treated as the two different constants are there. And these sweets can be sold at rupees 1,900 for packet respectively. माने sweet A को नौची तमे sell कले पाइबो 1,000 rupees and B को sell कले पाइबो 9,000 rupees. वर्तमान कहूची जे केते amount of product A, I mean the sweet A and sweet B manufacture करिबा जा फलरे हमारा profit टा maximum हवा. That is the revenue to be maximum. So therefore, objective कौन हला ना maximize, and the केते पैसा रे sell करिया product A रा price हला 1,000, B हला 900, हमें product X को product A को नहीं गले A x1 and that of B को नहीं गले x2. So equation लिखला maximize Z equals to, here we missing the Z. Z equals to 1,000 x1 plus 900 x2. And what are the subjective constants? Constant मतलब दीटा constant अछि, flour constant अछि, sugar 21 kilograms. हमें किछि unit 3 kilogram दरकार to manufacturing the sweet 1A to manufacturing the one packet of B. Similarly, we have 28 kilograms of your sugar and 3 kilograms required to manufacturing the sweet A, and 4 kilograms sugar to be required to manufacture the sweet B. So therefore, these are the two constants are there. And this is a non-negative constant. Sweet A and sweet B, जेमिति हमें manufacturing करिया पड़िबो. Therefore, x1 and x2 both have to be positive. Okay. Now, this is the concept of the formulation. Let's say I will start with another formulation. But in this particular case, when we have to segregating the term, systematically तमे देखाई दउची तापर त गोटे प्रॉब्लम देबी सेटा केनदे सॉल्यूशन हमें करिबा. एठी कोन कहले हमें डिसीजन वेरिएबल नैथिले कोन स्वीट ए स्वीट बी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हला ना हमें मैक्सिमाइज करिबा, सेल कर सला पर मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, दीटा कांस्टेंट रहला, फ्लोर आउ स्वीट दैट द टू कांस्टेंट्स, एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कोन रहला हमें जेमिति हेले दीटा को स्वीट्स को मैन्युफैक्चरिंग करिबा. टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल.
example systematically go through it and tell me what are the decision variable. Kiye decision variable achanti kaiba. Pada product I mean question systematic pada. Tapare mate kaha decision variable kiye and constraints gudika kon. Problem ta kon objective of the functions kon. Objective function profit maximization. Okay, objective will maximize the profit. Absolutely right. And what are the decision variable? X and M1, Y. M2, M3. Absolutely right. Product X and product Y, they are to be treated as the decision variable. That means the company kon korti manufacturing kori dita product. ठीक ଅଛି. And what are the constraints? M1, M2 and M3. Absolutely right. କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ product production କରୁଛି X and Y ସେଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ resources ଦରକାର ହଉଛି M1, M2 and M3. The availability capacity are to be 50, 25 and 15. That means M1 available ଅଛି maximumly 50 units, M2 25 units, M3 15 units. କିନ୍ତୁ product X production କରିବା ପାଇଁ 1 hour of machine dakar M2 ra 1 hour of machine dakar M3 ra. Similarly product Y require 2 hour of machine 1 and 2 hour of machine 2 and 1 hour of machine 3. आपको ये बेस करके हमें फॉर्मुलेट कर दिया तो three constraints are there. किंतु contribution कितना है ना contribution अच्छे ना 5 rupees for product X and 4 rupees for product B. They are the contributions. I mean the profit per unit, cost per unit, that is called the contributions. Okay. The objective function is called profit. The objective function is to be maximize the profit. 5x, I mean 5x plus 4y. कि मैं तो मैं लिख रही हूँ 5x1 plus 4x2 and that is to be 1 hour of machine 2. That means machine 1 is not using. That means 0 unit to be there. 0 unit to be using for the machine 1. Okay. आमे कौन करिवा systematically 1 by 1 आमे तब लिखिबा machine 1 रा यूज करा होची कोठी product X ପାଇଁ केते product Y ପାଇଁ केते बेस करी ताको गोटे constraint करिवा. Similarly machine 2 रा utilization less than equal to 50 करिवा. Similarly machine 2 ପାଇଁ less than equal to 25 and that of your machine 3 less than equal to 15. किंतु केते यूनिट यूज करछि प्रति टर्म रे M1 को केते होची M2 केते होची M3 केते होची ताको से अनुसार लिखिबा. फॉर्मुलेशन करा होची देखो मार्क करे कछु. Here, the formulation to be like this. Maximize Z equals to 5x plus 4y. Subject to constraint 0x plus 2y. कहेंगे एटी machine 1 टा जो यूज करोची product X को यूज करोनी product Y केवल यूज करोची. Right? Similarly, second machine 2, that is the machine constraint. Machine 2 जोटा कि available ଅଛି 25 units. X production करिया ପାଇଁ 1 unit and Y production करिया ପାଇଁ 2 unit यूज. Similarly, for the machine 3, it use 1 unit of machine 1, product X and 1 unit of product Y. And non-negative constant कौन करिबा ना X1 and Y or X and Y both are to be positive. So a pattern रे तुमको सब वाला ପାଇଁ formulation करिवा को पड़िबो. देखा आउट क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिवा कारण तुम दीटा जिनिस अछि फॉर्मुलेशन अछि सॉल्यूशन अछि ग्राफिक सॉल्यूशन मो फॉर्मुलेशन कहि साला पर ग्राफिक सॉल्यूशन को जिबे एक्चुअली सेम मैनर two type of model utilizes X and Y. It required 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. Machine 2 the product 2 model 2 required 2 hours of the grinding, 5 hours of polishing. Manufacturers have the 2 grinders and 3 polishers. Each grinder work 40 hours and polisher work 60 hours. Profit for the model X is to be 3 rupees and that of Y is to be 4 rupees. Whatever is the produce on the week is to be sold in the market. How should the manufacturer allocate his production capacity for the two type of product? Okay, maximize the profit. Objective is to maximize, this is not the profit. Yes or no? Objective is to maximize the profit. Contribution 3 out 4. So 3x Z equals to maximize profit. Z equals to 3x plus 4y or 3x1 plus
4x2 যা তুমি লিখি পারিব কেতটা কনস্ট্যান্ট আছে দুইটা কনস্ট্যান্ট আছে গোটে হলা পলিশ মেশিন Hello. কনস্ট্যান্ট গোটে হলা গ্রাইন্ডার কনস্ট্যান্ট কিন্তু Hello. পলিশ মেশিন কেতটা আছে Sir, screen the କିଛି visible ହଉନି sir. हाँ ଆଉ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ରାଇଟ୍ yes please Sir, ଆପଣଙ୍କ voice clear hello सर नेट टा आपन स्लो होइला हाँ am audible नो सर नॉट ऑडिबल okay बर्तमान असला I'm audible Screen visible ହଉନି sir. screen में तो share करने visible कोड है वो Invisible ହଉନି. screen रे Okay. वो share आवाज करे ठीक right से ହେଲା sir. यस सर होस्ट एल सर एबे ठीक है ला हाँ हां एबे होस्ट असला हाँ कौन कहला आगे आगे आसला ଆସୁଛି sir. okay that's right now just a minute I'm exposing it right so आको ये हमें कौन करिबा formulation करिबा while formulating it the outcome it will be like this I mean z equals to 3x1 plus 4x2 subject to constraint 4x1 plus 2x2 less than equal to 80 काहे के 80 ना सेठी दीटा थिला आ गोटे मशीन चलेया पई हेले 40 थिला 40 hours so दीटा मशीन जेतो आछे 40 into 2 therefore it will be 80 and second थिला 60 hour चलेया पई केतरा थिला ना तीनटा थिला so 3 into 60 that is the 80 180 so 180 unit में utilize कर the grinder and polish machine respectively therefore theta constant रहला and NNC हला x1 and x2 both are to be positive okay so यही pattern है तमे सब तक कोन formulation करिवो now after knowing the term formulation वर्तमान जीवा graphic solution केन करिवा there's a large huge amount of problems are there formulations forget about it now graphic solution solution अछि दी प्रकार गोटे हला ग्राफिक मेथड अछि गोटे हला सिंप्लेक्स मेथड किंतु हम सिंप्लेक्स मेथड कोर्स रे नै केवल ग्राफिक्स मेथड जिबा ग्राफिक्स रे जतले जिबा हमें एठी जते बेले दीटा कांस्टेंट थिबो के तीनटा कांस्टेंट थाओ ता से किछ लिंक नै किंतु दीटा वेरिएबल सब बेले थिबो डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी 2 यदि तीनटा डिसीजन वेरिएबल रहला ताहाले हमें ग्राफिक रे करि परिबा नाही we have to enter into the simplex method but inside in our course simplex method is not there सेति पय हमें कोन करिबा टू वेरिएबल को नै करे ग्राफिक्स का सॉल्यूशन करिबा प्रथमे हला हमें कांस्टेंट गुडी को ग्राफ रे पकेबा ग्राफ पेपर पकेबा तापरे हमर फिजिबल रीजन बाहा करिबा फिजिबल रीजन बाहा कला परे हमर ऑप्टिमम फिजिबल रीजन बाहा करिबा केमिति करा होची गोटे क्वेश्चन करिके देखे दोची तापरे हमें सॉल्यूशन अनगा जिंस करिबा ओके जस्ट मिनिट टू bring the pen for you thereafter you have to be solve it with the graph please just a minute
सो हमें कौन करिबा प्रीवियस प्रॉब्लम को जीवा सेटा को सॉल्यूशन करिबा और एटी किसी सॉल्यूशन अच्छी के ठीक আছে এই পার্টিকুলার প্রবলেম নিয়ে এটি দেইছি ম্যাক্স তিনটা কনস্ট্যান্ট দেইছি অ্যাসেম্বলিং ইন্সপেকশন অর স্টোরেজ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭେରିଏବଲ ଦେଇଛି x1 and x2 ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ତମେ you have to start with the graph paper ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା x axis y axis ଟାଣିଲ this is the x1 ଆମେ ନବା ଏଠି ଆମେ x2 ନବା so the ପ୍ରଥମ step ହେଲା ପ୍ରତି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ପ୍ଲଟ କରିବା ଦ ଗ୍ରାଫ ପେपर ରେ केमिति कांस्टेंट प्लॉट करिवे ना हमें इक्वेशन ने कन्वर्ट करिया फर्स्ट इक्वेशन कोन हबो ना इट इज 4x1 plus 10x2 हमें गोटे इक्वेशन करिवा इक्वल्स टू 100 ए लाइन टा हमें पकेबा ए कांस्टेंट को पकेबा केमिति पकेबा हमें यदि x1 को 0 नबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 x1 0 x2 केते हबो 25 10 x2 over 12 okay that's it x1 0 hele x2 hele 10 I mean sir less than what is equal the- to 10 हो ना no I mean equal करिसे इक्वेशन नहीं छै so point टा कोन हला ना 0 out 10 similarly जदि हमें x2 को 0 नहीं जिबा x1 केते हबो 25 so point टा vertex टा कोन हला ना 25 हो 0 so this is the two vertex बाहर करले को दिन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कोन हबो ना 2x1 plus x2 that equals to 22 हमो यदि x1 टा 0 नहीं जिबा x2 हला केते 22 22 ताले 0 22 हला गोटे पॉइंट देन हमें यदि नहीं जिबा x2 को 0 नहीं जिबा x1 हबो केते 11 11 ना 11 0 गोटे पॉइंट गेला सिमिलरली थर्ड कांस्टेंट नियो केते अछि 3x1 plus 3x2 that equal to 39 हले ताले पॉइंट उडी कोन हबो x1 जदि 0 हबो x2 हबो 13 जदि x2 टा जदि 0 नहीं जिबा x1 हला 13 ताले 0 13 आ गोटेला 13 0 राइट हमें ई पॉइंट उडी को सब पकेबा लेट्स स्टार्ट विथ द प्लॉटिंग द फर्स्ट ओके मैक्सिमम केते ना 25 गोटे अछि 22 हमें कोन करिया 10 10 नहीं जिबा ओके एटेला 10 एटेला 20 एटेला 30 सिमिलरली एटेला 10 एटेला 20 एटेला 30 सो फर्स्ट इक्वेशन हमें तो पकेबा केन पकेबा को 0 10 0 10 लाई पॉइंट 25 0 लाई पॉइंट ए दीटा का पॉइंट को जॉइन करिकरी हमें गोटे स्ट्रेट लाइन टाणीबा राइट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 नाउ हमें यदि कहबा कांस्टेंट को देखिबा ताले कोन देछि ना 4x1 plus 10x2 less than or equal to 100 ताले हमें को पट एरिया टा नबा ए लाइन रो बॉटम पार्ट को नबा ना ऊपर को नबा को एरिया टा नबा ते देछि फिजिबल रीजन हां ऊपर पार्ट का तळ तळ पोर्शन नबा ना ऊपर पोर्शन नबा ऊपर टॉप परसेंट सर नो इट इज लेस देन देछि ना लेस देन देछि तमे जानि पानो जदी तमे लेख हमें अज्यूम सबले अज्यूम करबो x1 और x2 दीटा जदी 0 हैला एठी तमे 0 पकेला एठी 0 पकेला 0 plus 0 0 हैला 0 less than 100 yes 0 is less than 100 तारे कोन हबो हमें ए लाइन रो बॉटम पोर्शन को सबले नबा राइट तळु को नबा तसल ग्रेटर देन ठीक इक्वल टू है। है टॉप पोर्शन नबा ऊपर ऊपर को नबा इक्वल टू हो गेले तारी ऊपर रहबो हैला now Okay. comes to the second equation second constant 2x1 plus x2 less than or equal to 22 তাহলে কেতে দেইতলা না 0 22 0 20 এটা আছে 22 আমি পাখা পাখি হই যাব তারপরে দেইছে কেতে 11 and 0 11 হই যাব এই পাখা পাখি হই যাব
सो ए दिटा पॉइंट को जॉइन करिया में टानिबा दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 जानिला इक्वेशन नंबर 1 हेतला दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 नाउ यार सेंट हम देखिबा को पोर्शन दिबा हमरा अगेन 0 0 में बोल के 0 + 0 इज लेस देन इक्वल 22 अगेन बॉटम पार्ट जीवो ता लाइन रो तल पोर्शन दे ये सुनो यार भी बॉटम पोर्शन दा जीवो राइट नाउ टर्न्स टू द third equation 13 13 both 13 13 0 0 13 and 13 0 to be here right यदि को मिसे करी हमें join करिबा while joining that one the curve to be moved like this pattern this is the equation number 3 तो हमें लाइन टाणिले তাহলে ইয়ার কোন হবে अगेन আমি 0 যদি 0 পকাইবা 0 + 0 लेस देन 13 दैट मींस को एरियाटा हमरो सैटिस्फाई हो कॉमन एरिया कोडा बॉटम which is the common area which one we have to take into account the common area To the just a minute. Which area we have to take the common area this particular shaded region right this area is a common to all then तमे कहउथबो भाउथबे काई तळ उडा काई निया हलानी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट काई निया हला काई देजी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट देजी ना x1 हमारा पॉजिटिव रहइबो x2 मते पॉजिटिव रहइबो x1 जदि पॉजिटिव हला दैट मींस x1 = 0 x1 = 0 माने x2 एक्सिस आ x2 = 0 माने x1 एक्सिस सेति पई हमें कौन सी जिनस में नबा नहीं थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे नबा में फर्स्ट क्वाड्रेंट रे नबा ताले कॉर्नर पॉइंट को केते एटाला 0 0 एला कॉर्नर पॉइंट ए पर्टिकुलर पॉइंट केते ना इट इज 11 0 राइट देन हमरा এই যে পয়েন্টটা কইছি এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা 11 0 কারণ এটা 13 13 0 এটা সো 11 0 এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা কেতে না it is 0 10 0 10 then आहुरी दीटा पॉइंट रहलानी एई गोटे पॉइंट आ एई गोटे पॉइंट ए दिरा पॉइंट हमें केन कैलकुलेट करियो ना लेट्स से हमें ताको नेमिंग दोचे दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी एंड दिस इज ई सो A, B, C, D, and E. This is the feasible region. Feasible region, right? हमारा दरकार एक कॉर्नर पॉइंट बोले एक कॉर्नर पॉइंट आला हमें जानी से लेनी A पॉइंट कहते हैं B पॉइंट कहते हैं C पॉइंट A पॉइंट इज बी 0 0 A is to be 0 0 right B पॉइंट कहते हैं अच्छी B पॉइंट is 0 10 0 10 C point yet to be calculated D point yet to be calculated and E point is already there 11 what is that it is 11 0 right वर्तमान हमें B C और D point बाहर गया C D टा केमिति होची ना C point टा कहा को इंटरसेक्शन करची इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 वर्तमान इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करो इक्वेशन 3 है लाइटा इक्वेशन 1 है लाइटा वर्तमान एदिरा सॉल्व करी करी x और y रो वैल्यू आकर आई मीन x1 एंड x2 रो वैल्यू आकर केमिन जानिबा ना इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दबा केते हबो ना 12x1 plus 30x2 that equals to हमें कितने multiply 3 it is 300 similarly third equation को करिबा 4 मल्टीप्लाई कर दबा 4 जब मल्टीप्लाई करिबा केते हबो ना 12x1 बुझेलन सर आउते रिपीट करियो सर इक्वेशन सॉल्व करो प्रथम माने चतुर्थ क्लास रे पाठ टू वेरिएबल इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन सर कोन ग्राफ दे छी ग्राफ रे टिके प्रॉब्लम कोन करिबी ग्राफटा कोन हैला ग्राफटा तो प्लॉट करिवो वैल्यू सर दबाला एदी प्लॉट करि चलिबो हां को जगह रे बुझि पारले सर मते को तापर कोन लाइटर बुझेलन को जगह रे बुझि पारनो कोन एठी जो लिखछन सर
सर हाँ एबीसीडी जो लिखिछन बुझिए सेटा ला फिजिबल रीजन कॉमन एरिया जो कोटा ना देले हाँ कॉमन एरिया कौन लिखा है जेटी प्रथमे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करिवो कांस्टेंट को नेके प्लॉट करिवो तापरे फिजिबल रीजन हमें बाहर करिवा लिखा है जे ना नहीं सो ये फिजिबल रीजन हमें कैलकुलेट करा कॉमन एरिया आज्ञा को कहा जाए फिजिबल रीजन सो कॉमन एरिया ता कॉर्नर पॉइंट को कहा जाए फिजिबल सॉल्यूशन आज्ञा मतलब ग्राफ प्लॉट करिवो कॉमन एरिया कोटा देखिवो यूनियन इंटरसेक्शन जानि जटी इंटरसेक्शन माने कोन कॉमन एरिया सेट थ्योरी आज्ञा पढ़ा आज्ञा सेट थ्योरी रो जेमिति जानिचो कॉमन एरिया कोटा सब तक सैटिस्फाई करथुवो so that common area is to be a b c d and e वर्तमान से कॉर्नर पॉइंट गुडी को बाहर करिया को पड़िबो टू नो द फिजिबल सॉल्यूशन हमें वर्तमान बाहर करिया को जाउचे ए बाहर चलणी बी बाहर चलणी ई जानि सारिछे सी पॉइंट ता जानिबा पई हेले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करिया को पड़िबो इक्वेशन अच्छा 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करिवा पे केमिति हबो ना एठी इक्वेशन 1 ने 3 मल्टीप्लाई कर देबा इक्वेशन 4 3 रे कोन करिवा एठी 4 मल्टीप्लाई करिवा कोएफिशिएंट यूकेट करी सॉल्यूशन हुए कि नहीं ठीक आ ठीक से करता नहीं ए छोट छोट जिंस ओडा एठी तो बताओनी सो 4 जे मल्टीप्लाई करछे ये भी हैला 12x2 दैट इक्वल्स टू 12 into 39 केते 39 ने 12 मल्टीप्लाई करके केते हबो 39 ने सर 39 ने 4 मल्टीप्लाई हो 4 मल्टीप्लाई केते होची 156 156 वर्तमान ताको सब्ट्रैक्ट करिबा सब्ट्रैक्ट कले एटी इक्वेशन x1 कोएफिशिएंट समान अछि कटि गला एटी 30 to 12 गले केते 18 18 18x2 that equals to 300 to 156 गले केते हबो 144 हां 100 44 44 ओके एंड x2 इक्वल टू केते हला 144 divided by 18 केते 8 8 ओके x2 हला 8 वर्तमान x2 वैल्यू आई बोला तमे ए दीटा इक्वेशन जे कोन जगह रे पका x2 हला 8 यदि x2 हला 8 x1 हला 5 ओके दैट्स राइट x1 हला 5 तले हमें एटा को पॉइंट सी पॉइंट पाई गले कहते ना 5 आउ 8 सिमिलरली डी पॉइंट है सॉल्यूशन अब का को बेस करके ना इक्वेशन नंबर 2 आउ इक्वेशन नंबर 3 को रा इंटरसेक्शन सेटा वर्तमान ए दिरा इक्वेशन सॉल्व करो ए दिरा इक्वेशन सॉल्व करियो डी पॉइंट केते मते को 2 आउ 3 को 2 3 को सॉल्यूशन अब 2 3 माने के इधर केवल इक्वेशन नंबर 2 रे केते मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर दो एटा 3x2 x2 कटि जिवो के नहीं ताले केते हबो ना 6x1 plus 3x2 that equal to 3 multiplied 66 तळे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन किसी मल्टीप्लाई करे दरकार नहीं 3x2 that equals to 39 just subtracting करिवो एटा कटि जिवो ताले 3x1 equals to 66 39 डिफरेंस कते 66 26 और ये 27 27 x1 equal 9 सर ओके x1 9 वाला x2 केते हबो x1 9 22 to 9 जीवो हरी 2 रे डिवाइड कर दियो केते हला 4 ओके 9 और 4 सो इट हला डी पॉइंट हला केते x1 9 हां x2 9 हां x1 9 सो 9 and 4 जानि हला सो सब तक कॉर्नर पॉइंट बाय कर दैट इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन वाला फिजिबल सॉल्यूशन वाला ताकू ने के तमे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पकेबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के देजी z that equals to 60 x1 plus 50 x2 वर्तन पका 0 into 60 plus 0 into 50 केता हबो 0 a पॉइंट 0 देला b पॉइंट केता हबो 0 plus 10 into 50 केते 500 आउटकम इज 500 तापरे 5 आउ 8 5 पका x1 रे 5 पड़िबो x2 रे 8 पड़िबो सो 60 into 5 केते 300 प्लस
8 into 50 कहते 400. So 3 4 कहते हैं मिसले 700. Similarly 9 into 60 540. Then 50 into 4 that is 200. So ये कहते हैं 740. Similarly, and it is 11. 11 into 60 plus 660 plus 0 660. তাহলে আমি কোন ଥିଲା क्वेश्चनটা কোন ଥିଲା না हमको मैक्सिमाइज करिया ଥିଲା আমি जो ভ্যালুটা বাহার করলে কোডটা maximum কি 0 500 700 49. 740. Okay, that's right. So 740 is the maximum. As 740 is the maximum, তাহলে solution কেতে না x1 ହେଲା 9, x2 ହେଲା 4 and z ହେଲା that is the 740. So that is the answer. नहीं ହେଲା? So এই type ର ତମ solution କରିବାକୁ ପଡିବ. ମୁଁ ଦେଖो इस जगह मार्क कर ग्राफ कर देले कॉर्नर पॉइंट ओडियो बाहर पड़ला 0 10 5 8 and 9 4 11 0. Okay, and 0 0 8 point to 0 0 बाहर वर्तमान ताको नेले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पकेले पकेला परे कौन बाहरला ना 550 560 then 740 then 700 then 500. We find the 740 the largest one, therefore the solution है 9 and 4. नहीं है so 8 type रो तमे solution करिवो एटा केते मार्क Right. पड़े एंती क्वेश्चन 20 mark 12 mark रो पड़ियो हाईएस्ट 12 mark तो जो मैक्सिमम 12 mark ही पड़ियो ओडा बुझियला फॉर्मुलेशन करिके सॉल्यूशन करियो बेले बेले भी खाली फॉर्मुलेशन देता है किबा बेले बेले भी खाली सॉल्यूशन देता है नहीं है एमिति तमे क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करिवो लेट्स से आउ गोटे तम क्वेश्चन दउची देखा करिके देखाइबो ए जोटा फर्स्ट फॉर्मुलेशन आमे करिथिले ए क्वेश्चन सॉल्व कला ए क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करिवो केते हला x1 जदि 0 हला x2 केते हबो फर्स्ट इक्वेशन x2 हला 40 x2 जदि 0 हला x1 केते हबो 20 20 right. So 0 40 20 0 0 40 और 20 0. Similarly next कौन हबो ना x1 जदि हला 0 x2 हला केते 36 36. Similarly x2 जदि 0 हला x1 हबो केते 90 9. So 0 36 और हला 90 0. ताको नहीं के पके दबा एठी 40 20 90 36. Okay, 20 20 नहीं जा बेटर अब this is 20 it is 40 it is 20 40 60 60 and 80 and 100. Okay, similarly in this side also we take the 20 40 same wherein here 20 40 then 60 then 80 and then 100. Okay, then you have to put it कहते देखिए 0 40 0 40 हला एठी 0 40 thereafter 20 0 20 0 8 ए दिरा को जॉइन करी हमें गोटे लाइन टाणी दबा this is the equation number 1. Similarly second equation कहते हबो ना एठी देछि 0 36 0 36 to be 40 देला एटा 40 दिसला 40 रे 36 ता तो तळु रहइबो then 90 0 90 0 means ए पावे गेस 100 सेटा then a point को join करी सेंड दबा. Okay, this is the equation number 2. ताले common area कोडा हला obviously this is the common area less than दिरा को देछि ताले केते पॉइंट ना 0 this is the 0 0 हला o a point b point एटा केते थला b point केते थला एठी हमरा 20 0 20 20 0 ना 30 कोडा थला 36. 0 20 36 sir no 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 ei particular 0 36 ओ 20 सेटा
20 हाँ 20 এইটা 36 না এটা 36 हाँ Y 0 axis 36 that's 36. it हाँ हाँ that's it ठीक है ठीक then so A B C and D D point पाई गले C point टा केते हबो को C point पाई कोन करिया ना दीटा के इक्वेशन सॉल्व कर देबा दीटा के इक्वेशन सॉल्व करा केंदे हबो सॉल्व करिया पाई हेले ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दियो किंबा तळे 2 मल्टीप्लाई करो चॉइस इज योर जा भी तुम करछो 2 मल्टीप्लाई करो 4x1 plus 10x2 that equals to 360 and first equation केते अछि 4x1 plus 2x2 that equals to 80 subtract कर दिया कट गला then 10 रो 2 गले केते हला 10 रो 2 गले 8x2 8x2 equal to 360 minus 80 केते 280. 280 so x2 केते हबो 28 divided by 8 280 divided by 8 45. केते 35 45 তাহলে 35 তাহলে এটা 35 হবো আজ্ঞା ওকে 35 হলা তাহলে এটা 35 হলা x1 কেতে পকা যে কোন ইকুয়েশন পকাই দিয়া 35 into 2 হলা 70 80 minus 70 হলা কেতে 80 minus 70 হলা 10 10 by 4 হলা 2.5 नहीं yes sir okay that means x1 হলা 2.5 and x2 হলা 35 so ये सब तो कॉर्नर पॉइंट बाहर पड़ला बर्तमान ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने पकाई दो सो 0 0 गोटे पॉइंट आ गोटे हला 30 0 36 आ गोटे हला 2.5 35 and next one is 20 0 ये सब ने के पका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना 3x1 plus 4x2 so first 0 plus 0 next टा कहते हैं 36 into 4 so 36 into 4 कहते हैं 36 144 into 4 144 140 144 so 144 is there okay similarly 2.5 into 3 2.5 into 3 कहते हैं 7.5 7.5. then 7.5 then 35 into 4 140. 140 so 140 plus 147.5 and next one is to be 20 into 360 plus of 0 it is 60 so cos আমাদের যে maximum কি 147.5 so this is your answer কোন answer না x1 হলা কত 2.5 and x2 হলা কত it is 35 and z হলা z equals to 147.5 জানিলে জানি পেলাটি yes sir this is all Yes, about the term what is called the linear programming problem বর্তমান তুমি দেখো লাস্ট মডুল যেটা ছিল সব তক সরি গলা লাস্ট মডুল রে ଥିଲା কোন টিকে কা পাখରେ ଅଛି সিলেবাস দেখো পড় কোন লেখা ହେଇଥିଲା লাস্ট মডুল ସବୁ লাস্ট মডুল রে কোন ସବୁ ଥିଲା just a minute hello हाँ good okay बोलिए हाँ क्लास में हो यू कैन कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स ओके बेटा ऑनलाइन क्लास है 5 मिनट की बात करते हैं ओके हाँ class। हाँ कौन थिला देखिरा कि सिलेबस yes sir. हाँ कौन लिखा है सब पढ़ा लास्ट मॉड्यूल रे LPP, problems of हाँ allocation, problems of assignment, problems of transportation. ओके सब तो हमें कले एलोकेशन Yes, sir. प्रॉब्लम सब कले रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम एलपीपी रा ग्राफिक सॉल्यूशन कर देले फॉर्मुलेशन कले ट्रांसपोर्टेशन रा नॉर्थ वेस्ट कर्नर मेथड लिस्ट कॉस्ट मेथड बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड तापरे मोदी मेथड रे मध्ये ताको सॉल्यूशन कले देन असाइनमेंट प्रॉब्लम मध्ये सॉल्यूशन कले जंक्शन रूल रे ओके सो हमें सारी दले लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट बर्तन कमिंग क्लास रे हमें कोन करिबा आ केतरा क्लास रहला आ बोले दीटा खंडे क्लास अछि ना कि नहीं ତିନିଟା ସାର୍ ଆଉ ତିନଟା ଅଛି ଓକେ ସେ ତିନଟା ରେ ଆମେ मैथमेटिक्स तक पढिबा आरंभ करिबा
काली तो थिबो जदी हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट करिबा परम्यूटेशन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देन देयर आफ्टर हमें प्रोबेबिलिटी एंड आस्ते आस्ते पढिबा कोन हले ठीक अछि नर्सरी सर एक्स्ट्रा क्लास नेबे एक्स्ट्रा क्लास कोन हां सॉरी जो आइ तरे आज्ञा किछि नै तमे हमें को डिटेल्स पढु छै गोटो एग्जांपल करछो ना कोन बेसी करछो की हां सर बेसी हेले 2-3 घंटा करछो सर स्लाइड कौन टा कहले? के शेयर कर दे हां स्लाइड शेयर करियो ना बही दके ना स्लाइड शेयर कर दी मना करनु बही रे सर स्लाइड शेयर कोन लिखा है कि बुझियोनी बुझियोनी काहे की आ मु एठी कोन करछि किछ त नै मु निजे करछि देखै दउ खाली जस्ट सेति पई तो क्वेश्चन टा मु सर नउछि स्लाइड टी शॉर्ट फॉर्म रे अछि बही रे कोन देई छी बुझियोनी आ देख मु एठी कोन कली क्वेश्चन आनेली मु ग्राफ रेडी कली मु स्लाइड रे कोड एटा कोन ग्राफ रे सॉल्यूशन हेछि खाली क्वेश्चन लिखा है ना सॉल्यूशन हेछि ठीक है हां ऑब्वियसली मैथमेटिक्स जिंस से बही रो किछ बुझी होबनी सेति पई तुमको खाता पेन धरी करिया पड़े सब एग्जांपल को करिया पड़े हला ठीक अछि कमिंग क्लास देखिबा ताले दैट इज योर कौन सेटा कहंती मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आरंभ करिबा हले ओके सर ओके देन गुड नाइट ओके देन गुड नाइट गुड नाइट